ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं सतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Hare Krishna. Thank you everyone for joining. So let me remind you of verse 8, mantra 8. Mantra 8 was this one. So in this mantra, we read about the 10 qualities of the Supreme Lord. Okay. If you're following the trend of Isopanishad started with the invocation prayer, Om Purnamada Purnamidam, that one. So that said that, remember, these are the key words that we have taken from each mantra so far. So the invocation mantra, the key word was Purnam, that the Lord is completely whole and perfect, right? He can he's our complete maintainer, proprietor. He's the source of all sources, cause of all causes. He's a source of love, bliss, knowledge, everything. And so he can fulfill all our needs, all our desires, and maintain us completely. So this is Ishwar, complete, whole, and perfect. And the mantra 1 talked about Ishavasyam, that everything is property of the Lord. And so we should not be greedy in this world in order to maintain harmony with the nature, with the material world, with other jivas. We should remember that everything is property of the Lord. That is called Ishavasyam principle. Okay? And whoever lives in this way, with this understanding that Lord is complete, whole, and perfect, and everything belongs to Lord, it's his property, can Gigi Vishet. Gigi Vishet means such people deserve to live. They can live 100 years, they can live 400, 200 years. Actually, such people should live as long as they can. Why? Because these people will live in perfect harmony and they will bring a lot of, credit to this world. They will actually truly help this world in spiritual advancement, in connecting people with the Lord, in because they live in proper God consciousness. Jiji Vishet. So such people deserve to live as long as they can. Right? That's why we say that. That's why people cry when Vaishnavas leave, because these are the people that actually deserve to live. Now we are happy that they are, reconnected with the Supreme Lord. They are back in Golok, assisting the Lord and gopis in their intimate pastimes. But still, we feel separation from them because they were needed for this world, for the betterment of this world. So these people deserve to live. Jiji Vishet. On the other hand, there are people that are Atmaha, people that have no concept of God, no concept of self, and they waste their human life in just sense gratification, in just material entanglement. So they're completely absorbed in this material world. वो इस दुनिया में ही फंसे हुए हैं, और निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं है, because they have no concept of how to get out of here, or who they are, or what is their destination, what was their source, origin, and nothing. Or how to connect back to their source. None of that. So they are the killer of the soul. So these people, these souls, are actually trapped in this world and suffering. So they are killer of the soul, Atmaha.
Then the verses 4 and 5. So verses 1 to 3 talked about people that are in perfect harmony with the world versus those that are not in harmony with the world, that are exploiting the world. So this is the journey from need to greed. Atma are the people that are living with greed, just in sense gratification, just in exploiting this world. इस दुनिया में से निकाल लूं जितना निकाल सकता हूँ. तो उनको लगता है कि इस दुनिया में कुछ रस है और उसको मैं चूस सकता हूँ, उसको मैं शुगर केन की उसकी तरह उसका जूस निकाल सकता हूँ. लेकिन people that are Vaishnavas or self-realized souls or spiritualists actually know that there is nothing to relish in this world. So this is the journey from need to greed. Then verse 4 and 5 talks about the inconceivable aspects of Ishwar. Okay, inconceivable aspects of Ishwar, that he is fixed in the same place, yet he's present everywhere else. He's fixed in his dham, yet he can run faster than the fastest. He can walk anywhere, ejati, yet he's situated in one place. Like that, there were many inconceivable aspects of the Lord given. And these aspects are so inconceivable, मतलब इतने अचिंत्य हैं ये भगवान के ये features, ये qualities, ये characteristics कि उनको देवी देवता भी नहीं समझ सकते. बहुत ज्यादा लर्नेड लोग भी नहीं समझ सकते, वेदा से भी उनको समझा नहीं जा सकता, इतने भगवान अचिंत्य हैं. Then verse 6 and 7 talked about the spiritual vision of a Mahabhagwat, like the pure devotees, the Uttam Bhagwat, Uttam Adhikaris, that are at the topmost level of spiritual advancement. What is their vision of this world? They see Krishna, they see Lord's presence in everything and everyone, and they see everyone in relation to Krishna. So they see how everybody can be engaged in service of the Lord. So they have this ekatvam understanding. Atmani understanding means how everybody is in relation to the Supreme. So they don't look at people only on bodily platform, but actually in oneness with the Supreme. So this is 6 and 7. Now 8th, which we did last time, talked about the various, these are the various features of the Lord, or his body, you can say. So the most important word we took from that mantra 8, is akayam. So akayam का मतलब ये नहीं कि जिसकी कोई काया नहीं है. काया मतलब जिसकी कोई मटेरियल बॉडी नहीं, जैसे हमारी काया होती है ऐसी काया नहीं है. He has a body, he has a form, but he has a spiritual form, spiritual body. जैसे कि we are the self is separate from body. I am trapped in this body, this particular body that you're seeing. The real me is trapped in this body, right? So we are embodied souls. है ना, हम इसमें फंसे हुए हैं इस शरीर में. We are occupying this body for right now, for a few years. And so our goal is to give it up. We have to give up this body. And we take up a body according to our karmas. But he does not occupy a body. So he does not have to give up the body that you see. He and the body are same. So his body is always spiritual. His form is always spiritual. So he does not have to give it up. He does not take it up. ऐसा नहीं कि अभी कुछ लिया है, form ली है, कोई body ली है according to karma. नहीं, none of that. So he has a transcendental form, not a material body like ours. और इस point को further reinforce किया है, emphasize किया है by saying the word asnaviram. Asnaviram मतलब without veins. अब कोई कहेगा कि अगर body नहीं है तो veins भी नहीं होंगी, इसलिए कह रहे हैं कि body तो है पर material body नहीं है. That is proven by this point that there are no veins. जैसे कि मैं कहूं कि इसकी कोई बॉडी नहीं है और इसकी कोई बोन्स भी नहीं है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस. अगर किसी की कोई बॉडी नहीं है तो बोन्स कहाँ से होंगी, है ना? सो लेकिन यहाँ पर इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि भगवान की बॉडी है, बट द बॉडी इज नॉट मटीरियल in the sense we have a body. He does not have a body like that. He does not have veins and bones and ligaments that degrade over time, that become diseased or damaged over time, है ना? कैसे हमारी bones वो हो जाती हैं, weak हो जाती हैं, arteries और veins में clots हो जाते हैं, plaque हो जाते हैं, हार्ट वीक हो जाता है, मसल्स वो हो जाती हैं, लैक्स हो जाती हैं, धीरे धीरे उनकी टोन कम होने लग जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, बॉडी का लस्टर या ब्यूटी कम होने लग जाती है, सब कुछ सैग होने लगता है. ऐसे नहीं बॉडी है. सो विदाउट वेन्स का मतलब है नॉट मटेरियल बॉडी लाइक आवर्स. Okay, so because we and body are different. Avarnam. Avarnam मतलब he is beyond reproach. Avranam means beyond reproach.
मतलब उनके ऊपर कोई लॉज नहीं लगते, कोई jurisdiction नहीं लगती. He is not under any laws. So we are under the laws of this material world. That's why we have to follow the law of karma. And according to our karma, we get a body, or we get a family, or we get a certain destination in that life. है ना, कुछ चीजें भोगनी पड़ती हैं, कुछ suffer करना पड़ता है based on our sins or pious activities of the past. But he is beyond reproach. है ना, हमारी body की limitations हैं. We cannot go to, let's say, another planet or Vishnu Loka or anything. No, he can go to some other Loka. Like, remember that time when he went to Vishnu Loka to save the 4 sons of Brahmanas sons he saved. Or he can lift Govardhan. We cannot lift a mountain. He can dance with crores of gopis. We cannot dance with multiple people at the same time. He can expand and become millions of gopas and calves and cows and reciprocate with them equally for a whole year. We cannot do those things. So he is beyond the laws of this world, beyond reproach. तो उनके ऊपर कोई ग्रेविटी का, थर्मोडायनेमिक्स का, फिजिक्स के लॉज और केमिस्ट्री के लॉज और ये सब चीजें नहीं लगती. शुक्रम मतलब ही इज ओमनीपोटेंट, है ना, उनकी बहुत सारी एनर्जीज या पोटेंसीज हैं, दैट वी नो. कवि या मनीषी, ये भी हमें पता है, ही इज वेरी वेरी ही इज द कंप्लीट नोअर, वेरी वेरी intelligent. All the intelligence is coming from him. He's the philosopher, he's the Adi Kavi. So all the Vedic knowledge, everything is coming from him. Okay. Shuddham, he's pure. है ना, these 2 words we did. Shuddham means he's pure, he removes infection. So he's like that antiseptic. सभी इन्फेक्शन को किल कर सकते हैं. He can remove all the infections. So whatever sinful tendencies we have in our heart can be cleansed by just chanting his names, or by deity worship, or by associating with him in various ways. We can also get purified because he is Shuddh. अपाप विद्धम, और उनको कोई पाप नहीं लगता. ही इज फ्री फ्रॉम सिंस. वो पाप करते ही नहीं, वो पाप कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ ही इज कंप्लीटली सिनलेस. पाप होता है व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद दिस मैटर. ही इज अलूफ फ्रॉम मैटर. ही डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद दिस मैटर. ही इज अनटच्ड बाय मैटर. हाँ, सो पाप होता है जब हम इस दुनिया में इन 3 गुणों के संपर्क में आते हैं, और फिर हमें डिजायर्स आती हैं, इम्प्योर डिजायर्स, है ना. वी वांट टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट ही हैज नथिंग टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. He is aloof, he is untouched by the matter. He has no desires in this world for himself. We have many desires for ourselves in this world. He has no material motivation, so he's completely detached. So he's completely pure, he's completely innocent. He's not afflicted by the karmas or the sins. And actually, devotees are also like that. Devotees also have nothing to do in this world. They know that they have nothing to do in this world. They have no relationship with this world, actually. Their only relationship with this world is that they're here as representatives of the Lord, and they have to take people back to Godhead. So he says that in Bhagavad Gita, Namam karmani limpanti, na me karm phale spriha, iti mam yo bhijananti, karma bhir nasa badhyate. Activities do not taint me. Okay? I do not have any desires of this world. I do not have any desires for fruits of action. And those that know me in this way are also never bound by any karmic reactions. So devotees are also actually free from these, many of these laws. And then, so he's a papaviddhi. He's prophylactic. Prabhupada had said he's prophylactic. मतलब उनके संपर्क में आने से infection prevent भी होता है, infection of this material world. Then paribhu and swayambhu. So some of the qualities are that he's greatest of all. हम बोलते हैं ना विभु हैं, भगवान विभु हैं, अनंत हैं. We are anu, he's vibhu, he's infinite, we are infinitesimal, he's anant. So he's greatest of all. He's self-sufficient, he's paribhu and swayambhu. Self-sufficient and greatest of all. So this was mantra 8, 10 qualities of the Lord. And then he said that people that understand me in this way, not people that understand. He says, I have all these, Lord has all these qualities, and he awards the desires of people as per their wishes. And he has been awarding the desires of the jivas as per their wishes since time immemorial. This great personality, this Supreme Lord who has these 10 qualities, can fulfill your wishes as per your desire, and he has been doing that since time immemorial. तो जिस भाव से आप भगवान को approach करते हो, जिस mood से आप approach करते हो, if you want some material desires fulfilled out of him, then, and those desires are very strong in your heart, he will sanction those. If you have desire to come back to him, he will sanction those also.
If you have desire to get liberation, if you want to practice some Devi Devta worship, he will make those desires strong in your heart. So whatever you desire, accordingly, he will reciprocate. Ye yatha mam prapadyante, tam sathaiva bhajamyaham. Bhagavad Gita 4.11, right? And this is a verse that was spoken by Narad Muni to Yudhishthir Maharaj in Canto 7. As you know, Canto 7 is where Narsingadev appears to Prahlad Maharaj. So in that beautiful 7th canto, in the first chapter comes the verse where Yudhishthir Maharaj asks many doubts to Narad Muni. युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि ये जो राजसूय यज्ञ हुआ था उस सभा में कैसे भगवान ने शिशुपाल को मारा, शिशुपाल का वध किया. When he saw that killing of Shishupal, he had many, and he saw Shishupal entering into the body of Krishna. So he had many doubts. Yudhishthir Maharaj had many doubts. वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है. You should all read it. कि उनको बहुत सारे डाउट्स हुए. उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए नारद मुनि ने उनको ये हिरण्याक्ष की और हिरण्यकाश्यपु की कहानी सुनाई थी कि कैसे हिरण्याक्ष के सामने वराहदेव आए उनको मारने और हिरण्यकाश्यपु को मारने नरसिंह देव आए और किस तरीके से वो प्रहलाद महाराज के डिजायर्स को पूरा करने के लिए आए. सो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत कंफ्यूज हुए. ये शिशुपाल इतना पापी था, इसने भगवान को इतना ब्लास्फीम किया, इतना गलत गलत बोला, फिर भी ये भगवान की बॉडी में कैसे एंटर कर गया? He was very confused at that. So Narad Muni clarifies his doubts. Many doubts Yudhishthira Maharaj had in that sabha. It's very nice to see that how when people used to talk in that time, they will only talk about Hari Katha. They will only discuss about the activities of the Lord. Much like gopis will discuss only Hari Katha. Or cowherd boys, gopas are always talking about Krishna. So similarly, Yudhishthira Maharaj was also asking about various activities of the Lord to Narad Muni. And so one time Narad Muni says this verse in that conversation. He says, "My dear King Yudhishthir, the gopis by their lusty desires, Kamsa by his fear, Shishupal and other kings by their envy, Yadus by their family relationship with Krishna, you Pandavas by your great affection for Krishna, and we the general devotees." Narad Muni अपने आप को general devotee बोल रहे हैं. "By our devotional service have obtained the mercy of Krishna." कि लोग कैसे भगवान दया देने के लिए बैठे हैं, आपकी डिजायर्स पूरी करने के लिए बैठे हैं. एंड बाय डिफरेंट वेज लॉर्ड विल फुलफिल योर डिजायर्स. इवन people like Shishupal and other kings who are envious, Lord will reciprocate through envy with them. ठीक है, तुमको मुझसे लड़ना है तो तुम लड़ो. जैसे कंसा है, उसको भय था तो भगवान ने उसका भय के साथ रेसिप्रोकेट किया. He killed him. And then Kamsa got liberation. Shishupal, he reciprocated with his envy, killed him, got the liberation. All these other kings on the battlefield of Mahabharata, they got killed because of their envy. And they also got liberation. Gopis, by their conjugal mood, by their madhurya bhav, in a very sweet, intimate way, they serve the Lord. And Pandavas, because of their great affection, their love, their friendship for Krishna, they're seeking guidance from Krishna at all times, seeking help from Krishna at all times. So by that affection, Krishna gives them mercy. And Yadus, by their familial relationship. So like that. And devotees, which, we are all following in the footsteps of our Acharya Narad Muni, by our devotional service have obtained the mercy of Krishna. So जो जैसे चाहता है, per their wishes, I've been fulfilling their wishes since time immemorial, he says. So that was mantra 8. तो इसके बारे में किसी को कोई question या doubt या कोई comment? If not, we can go to mantra 9. Anybody wants to share anything from that verse? चलो ठीक है, मंत्र 9 करते हैं. Please do lead and follow. I don't know if we'll be able to finish it today, but we'll try. What I might do is today, instead of reading the purport, just discuss it, and next time we read the purport. So let's do Isopanishad verse 9. Andham tama pravishanti ye vidyam upasate
Tato bhuya iva te tamo. Tato bhuya iva ya u vidyayam rata. Ya u vidyayam rata. Translation. Anyone wants to read this? I can read, Mataji. Yes, Mataji. Mataji, ऐसा करो Those, पहले पैरास भी पढ़ लेना, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे. okay, first pair, okay. Those who engage in the culture of nascent activities shall enter into the darkest region of ignorance. Worse still are those engaged in the culture of so-called knowledge. Purport. This mantra offers a comparative study of Vidya and Avidya. Avidya or ignorance is undoubtedly dangerous, but Vidya or knowledge is even more dangerous when mistaken or misguided. This mantra of Sri Upanishad is more applicable today than at any time in the past. Modern civilization has advanced considerably in the field of mass education, but the result is that people are more unhappy than ever before because of the stress placed on material advancement to the exclusion of the most important part of life, the spiritual aspect. As far as Vidya is concerned, the first mantra has explained very clearly that the Supreme Lord is the proprietor of everything and that the forgetfulness of this fact is ignorance. The more a man forgets this fact of life, the more he is in darkness. In view of this, a godless civilization directed toward the so-called advancement of education is more dangerous than a civilization in which the masses of people are less educated. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग. एक बार वर्ड्स देखते हैं. तो इसमें लिखा है अंधम. अंधम मतलब इग्नोरेंस. तमा मीन्स डार्कनेस. तो दोनों का एक ही मतलब है, अंधकार हो, तमस हो ना. हम बोलते हैं ना ओम अज्ञान तिमिरंधस्य. तो अंधकार या तमस दोनों ही डार्कनेस को, नाइट को, इग्नोरेंस को, लैक ऑफ नॉलेज को बोलते हैं. ठीक है, अंधतमा है ना, अंधकार में कौन प्रवेश करता है? अंधकार या डार्कनेस में प्रविशंति, प्रवेश करते हैं कौन लोग? जो ये वर्ड जो है ये विद्याम नहीं है, अविद्या है. ठीक है, ये जब संस्कृत में ऐसे लिखते हैं तो ये ज्वाइन होके ये अविद्या वर्ड है. जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो अविद्या को फॉलो करते हैं. उपासना मतलब पीपल दैट वर्शिप और फॉलो वेरी सिंसियरली अविद्या. ओके, अविद्या और विद्या का कॉन्सेप्ट हमें इसमें समझना है, इस वर्स में. So that is why I have highlighted avidya as the main word of this verse. ठीक है, पिछली वर्स में हमने अकायम लिया था, इसमें हम अविद्या ले रहे हैं. ततो भूया इवा ते तमु, एंड स्टिल मोर. ओके, ततो भूया मतलब वर्स स्टिल आर दोस पीपल दैट आर एंगेज्ड इन. रता मतलब जो रति है, जिनकी जो रत हैं किसी चीज में, जो बहुत इमर्स्ड हैं, रत हैं, एंगेज्ड हैं किसमें? इन विद्या. विद्या कौन सी? सो कॉल्ड नॉलेज, दिस कल्चर ऑफ नॉलेज. ठीक है, तो जो अविद्या को फॉलो करते हैं वो तो अंधकार में जाएंगे ही. ठीक है, ये तो हमको पता ही, आई थिंक. अब कंफ्यूजन की बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि इस वर्ष में कि जो विद्या को भी फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी एंगेज्ड हैं, वो उससे भी बुरे हैं. ततो भूया, दे आर वर्स स्टिल. दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि विद्या में क्या जो इमर्स्ड है वो क्यों बुरा है, राइट? सो इसको पॉइंट को हमें समझना है. अविद्या और विद्या क्या है यहाँ पे, इसको समझना है. सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट. सो ट्रांसलेशन में हमने वर्ड नेशियंस आता है. नेशियंस का मतलब होता है वही इग्नोरेंस या लैक ऑफ नॉलेज. ठीक है, कि जो नेशंस के कल्चर में एंगेज है, मतलब अविद्या में एंगेज है, वो तो डार्केस्ट रीजन में जाएंगे ही, तमस में जाएंगे. बट वर्स स्टिल ततो भूया are those engaged rata in the culture of so called knowledge. तो ये विद्या वो विद्या नहीं है जो आप सोच रहे हो. this vidya is not transcendental knowledge. This vidya is so called knowledge. This vidya is the culture of knowledge. What is that so called knowledge or culture of knowledge? We have to understand.
तो मैं अपना थोड़ा स्लाइड्स खोलती हूँ और उसको समझने की कोशिश करते हैं. देन ये वर्स और नेक्स्ट वर्स इज टॉकिंग अबाउट सेम कॉन्सेप्ट, सो मे बी विल हैव टू टेक पार्ट ऑफ इट नेक्स्ट टाइम. सो लेट्स सी क्या मतलब है इसका. सो ये आ गया. अब इसमें कैन यू सी माय स्क्रीन माता जी? कैन समबडी टेल मी? Yes, Mataji. You see the slides? Yes, Mataji. Are you seeing the full page पे पूरी slide? On I don't know if it's a full. Yeah, now we see full page. ठीक है. Okay. Yes, Mataji. Okay. So इसमें क्या लिखा है मंत्र 9 में? I want you to understand 4 levels of education. Okay. The first is avidya. अविद्या हो गई बिल्कुल lack of knowledge, मतलब gross sense gratification, बिल्कुल grossly ignorant. ठीक है. ये होती है, ये अविद्या है, ये तो हम जानते हैं. ठीक है. Then there is a word called vidya in this verse, जिसको प्रभुपाद ने translate किया है so called knowledge या culture of knowledge. This so called knowledge is basically material education. Okay, the education that we are receiving in schools, colleges, universities, uh, people that are getting their PhDs and all sorts of degrees, even though they may become IPS, IAS, all these officers. So they're getting all kinds of general knowledge about this world and whatnot. So, but they are not getting any transcendental knowledge. Okay? So that material knowledge, the so-called knowledge, is actually in this verse is said worse still. Tato bhuya, उससे भी बुरी है. ये अविद्या तो gross ignorance है ही है, लेकिन जो ये material knowledge है, वो और भी बुरी है. क्यों? So try to understand this, because it is godless. Because there is no mention of, there is no connection of God with that knowledge. So we are being taught all these things about material sciences, technologies, and various types of scientific advancements in this world, but without the presence of God. उससे होता क्या है, वो बुरी क्यों है, वो अविद्या से बुरी क्यों है? क्योंकि that this so called knowledge, material knowledge, actually gives you a false sense of pride, false sense of ego, false prestige, and gives you more illusion. In this world, we are already born in darkness and ignorance and illusion. On top of that, this type of knowledge takes you further away from God. क्योंकि व्यक्ति को इतना अभिमान आ जाता है अपने अपनी इस डिग्रीज का, अपनी पीएचडीज का, अपने स्टेटस का, बिकॉज ही इज एबल टू मेक मनी विद दिस नॉलेज. ही इज एबल टू बाय अ बिगर हाउस या मोर कार्स एंड buy more lands, things like that. With this knowledge, he becomes materially prosperous, that actually this knowledge takes him away from the Lord. So he becomes falsely puffed up in this world. उसको और ज्यादा false ego becomes more prominent. He comes into stronger bodily conception. Uski bodily conception और strong हो जाती है. His bodily conception, his tendency to enjoy this world, his lordship tendency to lord it over the people, to become entitled in this world, that everybody should serve me. I am the Lord and everybody else is the servant. This mentality gets promoted by this so-called knowledge. That is why actually this knowledge is worse. So remember last class we were discussing that there are people that are very complicated and people that are very simple. Actually, people that are just grossly ignorant, in avidya, simply ignorant, like hippies were, in Prabhupada's time, simply ignorant. They are actually easier to bring to the path of God consciousness than people that are very much immersed in this culture of so-called knowledge. Because these people become very complicated. These people have so many false perceptions given by this material world, false concepts taught to them by this material world, that you can do everything with your own effort. You don't need to have faith in anything subtle that you cannot see with your senses. जो दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से वही सत्य हो सकता है. So they lose their subtle feelings and sensitivity
So when you don't have a soft heart, this knowledge actually makes you very hard-hearted. And unless you have soft heart, you cannot perceive Lord. So you have very gross body conception, and your subtle sensations and sentiments and feelings and emotions and values are actually lost. And without those sentiments, without a soft heart, without those values, without those human virtues, you cannot appreciate the presence of Lord in various aspects of our life, in various people and various things and situations. तो इसीलिए ये जो सो कॉल्ड नॉलेज है, ये इट इज मोर डेट्रीमेंटल, इट इज मोर डैमेजिंग, बिकॉज इट मेक्स यू वेरी actually hard hearted. It makes you very complex, complicated person who loses his subtle faculties of human intelligence actually. तो इसलिए इसको भी ये उस अविद्या से भी बुरी है। इसको जहाँ पे विद्या कहा गया इन दिस वर्स, इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ वेरी वर्स्ट टाइप ऑफ अविद्या। ओके, सो इस सबको अविद्या समझना है, ठीक है, चाहे ग्रॉसली इग्नोरेंट है, चाहे वो इस सो कॉल्ड कल्चर ऑफ नॉलेज की वजह से इग्नोरेंस में आ जाता है, दैट इज ऑल्सो अविद्या। दैट्स व्हाई आवर स्क्रिप्चर्स कॉल मटेरियल नॉलेज अविद्या। Then we know that the vidya is transcendental knowledge. Okay, vidya is the one that will get us out of this world, that gives us humility, that gives us faith, that invokes our love for the Lord, invokes our sentiments, the sensitivity to feel, perceive the presence of Lord in this world. That is called transcendental knowledge. Okay, it is very subtle, it is very sublime knowledge. That it is sometimes called sublime knowledge, like Buddha was called the sublime one. Why? Because it is very sublime, it cannot be perceived by gross senses. कोई कहे मुझे दिखाओ मेरी आंखों से या कानों से या हाथ से मैं छू सकूं, नहीं, this is very sublime, this is beyond your bodily conception. For that you have to become very attuned, in tune with the scriptures, with the mood of the devotees and the Vaishnavas. You have to feel those transcendental vibrations in the Harinam. Then this transcendental knowledge will manifest to you. So it's not जैसे कि आप सोच के देखो, जैसे कि हाथ है, like this my hand. If my hand has a lot of nice sensations, right? Like I can feel very subtle things, right? Our hands have such subtle, fine tuned sensation that even if people become blind, they can read a book because of braille लिपि से वो book पढ़ सकते हैं पूरी, क्योंकि हाथ में इतनी अच्छी sensations हैं. Now let's say I put a glove on my hand. Will my sensations be enhanced or subdued? ग्लव डाल दूंगी तो ज्यादा फील कर पाऊंगी या कम फील करूंगी? कम फील कम करेंगे। फील कर पाओगे। कम फील कर पाऊंगी। मेरी जो वो सेंसिटिविटी थी, जो मेरी फिंगर्स में इतनी सॉफ्ट सटल चीजों को फील करने की भगवान ने मुझे सेंसेशन दी थी, वो मैंने खत्म कर दी ग्लव डाल के, है ना? तो this so-called knowledge, this culture of knowledge is like putting gloves on your fingers so we cannot feel the subtle things of this world. इसलिए लोगों में प्रेम और सदाचार, good etiquettes and humility and tolerance and forgiveness and patience, these values actually get lost because people become very self-centered by this so-called culture of knowledge. Whereas with transcendental knowledge, they become very expansive, their consciousness expands, they become very giving and forgiving and tolerant and merciful, compassionate, par dukha dukhi, right? Whereas so-called knowledge makes you par dukha sukhi. So this is the difference between these two types of knowledge. तो भगवान को क्या feel करेंगे? You even lose sensitivity towards other creatures, other people, even your family members, everything by this so-called culture of knowledge. So that is why this knowledge has been condemned in this verse. ठीक है, फिर एक लेवल होता है कि जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। अब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज प्रभुपाद ने ये परपोर्ट में बताया है, we will read about it. If taken from a corrupt, unscrupulous, let's say fraudulent teacher or a cheater, not a teacher, cheater, then that is corrupt spiritual education. तो वो भी बहुत बुरी है, वो भी condemned है. So we should take transcendental knowledge from a bona fide spiritual master. So out of all these three, avidya is gross ignorance, so-called culture of knowledge is even worse, tato bhuya, worse still than the avidya, and corrupt spiritual education is
is even worse than any of these, and the best is transcendental knowledge, the divine knowledge. This when combined with this knowledge, जो ये so called knowledge है, जो material knowledge है, अगर इसको आप transcendental knowledge के साथ combine करके दो, then it actually, the material knowledge can be put to a good use, and that person actually becomes very properly functional in this world. He does his, जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला कि लड़ते रहो, be a soldier, be a warrior, but be a spiritual warrior, fight for me. Similarly, all of us, whoever you may be, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप टीचर हो, लॉयर हो, जो भी हो, साइंटिस्ट हो, but when combined with transcendental knowledge, your value around you will increase in your profession, in your home, into your friends. You can add more value actually to that same job. Instead of exploiting people, you'll be serving people because you have the correct values. You can see, you have subtle sensations, you can feel and see the presence of divinity within everyone and around you and in all situations. So that is the value of transcendental knowledge. फिर तो ये मेन मूड है इस वर्स का that I wanted to convey to you. Then ये हमारे scriptures में, जैसे श्रीमद् भागवतम में and even Yog Sutras by the Patanjali, this is mentioned that avidya is of 5 degrees. Okay, avidya is of 5 degrees. So avidya का मतलब क्या है? विद्या को purport में प्रभुपाद ने बताया कि avidya means to be covered by the material energy, by the illusory energy or maya shakti, mahamaya of the Lord. So महामाया से कवर होने का मतलब है, and we are all born into delusion. We are all born into the illusion of this world. So when we are born in this world, what does that lead to? We get covered by the material energy, so we forget our relationship with Krishna. एक भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत अच्छा सॉन्ग आता है. It needs a very beautiful voice to sing it. It's called भूलिया तोमार. कि मैं आपसे, जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, मैं जब माँ के गर्भ में था, वूम में था, आई रिमेम्बर्ड यू, आई न्यू यू, आई रिमेम्बर्ड एवरीथिंग अबाउट यू, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके पास वापस आऊंगा. लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, मेरे को माता पिता से इतना प्रेम मिला, फैमिली मेंबर्स से इतना प्रेम मिला कि मैं आपको भूल गया. और उसके बाद मुझे फिर स्कूल जाने को मिला, मुझे शिक्षा मिली, और मैं आपको भूलता चला गया. उसके बाद मैंने जॉब करनी शुरू की, पैसे कमाना शुरू किया, और मैं और पफ्ड अप हो गया बाय माय एजुकेशन एंड माय अर्निंग. फिर मैं विदेश चला गया और मैं आपको भूलता चला गया. बहुत ही वंडरफुल सॉन्ग है. मे बी विल सिंग इट नेक्स्ट टाइम, कि मैं आपको भूलता ही चला गया. तो और अब मैं एकदम बूढ़ा हो गया हूँ, और अब मैं कैसे, मुझे आप याद नहीं आ रहे, आप कौन थे, लेकिन आप कोई थे. So it is very beautiful song. I don't know if I can sing, maybe Nirbhay Prabhu can sing, or one of the devotees. But that is the level of our ignorance. We are born in this avidya, in this ignorance, and that is called forgetfulness of Krishna. This avidya is forgetfulness of Krishna, and it keeps getting stronger in this world. These are the 5 levels of avidya. सबसे पहले होती है तमस. ठीक है, तो यहाँ पे ना 2 चीजें लिखी हैं. I don't know, this is little technical. If you can follow, fine. If not, you can disregard it. It's okay. So यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं. एक ये है, ये 5 चीजों का सेट है. अविद्या, या जो जनरल इग्नोरेंस में हम पैदा होते हैं, दैट लीड्स टू अस्मिता. अस्मिता मतलब ईगोइज्म की बॉडीली कंसेप्शन. ठीक है, मैं ये बॉडी हूँ, और सोल के बारे में भूल जाते हैं कि मैं सोल हूँ. दैट इज कॉल्ड अस्मिता. ओके, ईगोइज्म. बॉडीली कंसेप्ट में आने से, ये फॉल्स ईगो आने से, अस्मिता आने से हमें इस दुनिया को भोगने की लस्ट आती है. दैट इज कॉल्ड राग. इस दुनिया के लिए राग आता है, लस्ट आती है. ओके, वी वांट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड. राग से फिर द्वेष आता है. क्यों? द्वेष का मतलब कि envy. If we are not able to enjoy certain things, how come Lord is able to enjoy, or how come certain other persons are able to enjoy these things? I don't have. उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सुंदर कैसे, उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे? द्वेष, envy आता है. सो राग से फिर द्वेष आता है, और द्वेष से फिर अभिनिवेश. अभिनिवेश मतलब फियर, बहुत स्ट्रॉन्ग फियर आता है कि कहीं मेरी ये बॉडी या इस बॉडी की चीजें मुझसे छूट ना जाए. all the identifications that I've created about this body, whether it's my profession, whether it's my bodily beauty or my health or my money or my family members, anything related to this body, we are very scared of losing. Titles, fame, name, anything. So fear आता है.
So avidya leads to these things. Okay, ignorance leads to these are the total 5 things that are caused by this material energy, illusory energy के संपर्क में आने से. फिर ये 5 क्लेश बताए गए हैं by पतंजलि in योग सूत्रास. Okay, 5 क्लेशस. फिर इसी तरीके से हमारे स्क्रिप्चर्स में, श्रीमद् भागवतम में, ये सब श्रीमद् भागवतम में भी आते हैं, ये बताई गई है अविद्या इन 5 डिग्रीज. 5 मतलब सबसे नीचे की अविद्या से लेके सबसे स्ट्रॉन्ग अविद्या. तो जब तमस होता है सिर्फ डार्कनेस या इग्नोरेंस, ठीक है, जो हमने भी पढ़ा, अविद्या होती है कि जस्ट इग्नोरेंस होना, है ना, पता नहीं कि मैं कौन हूँ. फिर होता है मोहा. मोहा मैं आपको एक्चुअली अगली स्लाइड दिखाती हूँ. Look at this. Tamas होती है condition of not knowing anything about the spirit soul. So we don't know that we are the soul. We are not this body. That is tamas. फिर होता है मोहा. मोहा मतलब कि I am this body and everything belonging to this body is mine. So मोहा आता है. तो मोहा is associated with अस्मिता. ठीक है, false ego से related है. अस्मिता थी false ego. So मोहा is associated with false ego. फिर आता है महामोहा. वो मोह अपनी बॉडी के लिए बढ़ता रहता है and we become mad after material enjoyment. We start lusting after various things of this world. That is called महामोहा. So महामोहा is associated with राग या lust. ठीक है, तो अब देखो, अविद्या is associated with tamas, अस्मिता is मोहा, राग is associated with महामोहा, then द्वेषा is associated with तमिश्रा. तमिश्रा मतलब envy या एनवी की वजह से हमें आता है कि मैं क्यों नहीं उतना एंजॉय कर सकता जितना भगवान कर सकते हैं. तो हम और भगवान से दूर जाते हैं क्योंकि हमें उनसे द्वेष हो रहा है. एंड देन अंध तमिश्रा. तमिश्रा से भी ऊपर की स्टेज है अंध तमिश्रा, लाइक बहुत ही घोर अविद्या की स्टेज है, वेयर वी थिंक दैट डेथ इज द अल्टीमेट एंड ऑफ अस एंड वी थिंक बॉडी इज द सेल्फ. सो जैसे ये बॉडी खत्म होगी मेरा भी अंत हो जाएगा and everything will therefore end with the end of this body. Called this is called Andhata Mishra. So extreme fear, blinding darkness, fear, abhinivesh hota hai. This is called mithya gyan. तो ये अविद्या की 5 डिग्रीज हैं या 5 कलेशास हैं. इसको बहुत ज्यादा से याद करने की जरूरत नहीं है, just something to know about that avidya can be so strong in this world. So now I just want to engage everybody for a few minutes. Please tell me, हमने बात की कि देयर इज मटेरियल एजुकेशन या सो कॉल्ड कल्चर ऑफ नॉलेज, जिसको इस वर्ष में विद्या बोला गया है, सो कॉल्ड नॉलेज बोला है प्रभुपाद ने. और दूसरा होता है दिव्य ज्ञान या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एजुकेशन. इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस बताइए कि क्या, अभी हमने बात कर चुके हैं एक्चुअली. सो आई जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू, आई हैव लेफ्ट दिस स्लाइड ब्लैंक, कि इसका क्या रिजल्ट होता है. Material education without दिव्य ज्ञान, without presence of God, a godless education जो आजकल मिलती है सोसाइटी में, यूनिवर्सिटीज में. प्रभुपाद एक बार MIT गए थे, तो MIT में उन्होंने बताया कि यहाँ पे बड़े इंजीनियर्स और ये सब बन के निकलते हैं. तो प्रभु ने कहा MIT तो ठीक है, बट वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ ऑलमाइटी हियर. सो देयर इज नो डिपार्टमेंट ऑफ ऑलमाइटी एनीवेयर इन एनी अदर यूनिवर्सिटीज. तो ये क्या करती है मटेरियल एजुकेशन? कैन समबडी एक एक कुछ बता सकते हैं? Mataji, like you were explaining, the material education can cause egoism, entitlement, prestige, atheism sometimes, and that can lead to vikarma, which leads to bondage. And if we mix that material in education with the spiritual education, then we can learn through the scriptures about our relationship with Krishna, and we can live our life in Krishna consciousness. That's what I would say. So आपने कहा कि इससे कई बार क्या होता है, एथिज्म. बहुत अच्छा बोला आपने. This can lead to atheism because it takes us away from Lord, right? Yes. और इससे हम और एंटेंगल होते हैं और ट्रैप होते हैं, बॉडी कंसेप्शन बढ़ती है, ईगो बढ़ती है. ठीक है. यस पूनम माता जी. माता जी, एथिज्म माने क्या होता है? एथिज्म होता है भगवान को नहीं मानना. अच्छा, नास्तिक जैसा. नास्तिक. हाँ, नास्तिक. ठीक है. किसी रवि प्रभु ने लिखा है मटेरियल नॉलेज टेम्परेरी होती है. यस, टेम्परेरी होती है, चेंज होती रहती है, राइट. शाश्वत नहीं है, एटर्नल नहीं है. स्पिरिचुअल नॉलेज शाश्वत है, एटर्नल है, तो वो चेंज भी होती रहती है. मटेरियल एजुकेशन कभी रेलेवेंट है, कभी रेलेवेंट नहीं है, टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है.
लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन हमेशा रेलेवेंट होती है, हमेशा रहती है, सेम होती है, चेंज नहीं होती है ना। और माता जी, हम्म, स्पिरिचुअल जो हमारी है, हमने जितना भी इस जन्म में स्पिरिचुअल हमने प्रोग्रेस किया है, वो हमारे नेक्स्ट जन्म में हम उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो मटेरियल है, वो हम नेक्स्ट जन्म में हमको बिल्कुल जीरो से फिर से स्टार्ट करना होगा। इस जन्म में चाहे हम कितने भी ऊंचे पहुंच जाएं। हाँ, वो खत्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो शाश्वत है, वो खत्म हो जाती है। स्पिरिचुअल एजुकेशन अगले जन्म में भी चलती रहती है, क्योंकि वो सोल का बिजनेस है, वो सोल का ज्ञान है, तो वो चलते जाता है आगे भी। तो वेरी नाइस पॉइंट्स। और कोई पॉइंट? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमने ये भी बताया कि स्पिरिचुअल, ये मटेरियल एजुकेशन, ये वैसे माता जी ने बता ही दिया कि सटल सेंटिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, वैल्यूज वर्च्यूज वगैरह नहीं देते अगर हम, है ना, तो भगवान की प्रेजेंस परसीव नहीं कर सकते। लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन से आपका विजन एनहांस होता है, आप भगवान के प्लान्स को समझ सकते हो। मटेरियल एजुकेशन में एक ये भी होता है कि यू हैव अनड्यू फेथ इन योर ओन एफर्ट्स एंड ओन एक्शंस एंड इन्वेंशंस, है ना, इसलिए लोग अपने ही इन्वेंशंस और एफर्ट्स और जो मटेरियली प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं, उसी पे ही विश्वास करते हैं। देयर नो फेथ इन डिवाइन, अनड्यू फेथ इन वन्स ओन इन्वेंशंस एंड एफर्ट्स। और बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं लोग इन दोनों को, ये नहीं सोचते कि वन हैज टू बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ द अदर। They just divorce them completely, complete like dichotomy or duality you can say happens. People completely separate the two. Increases the ego. हाँ, bodily conception increase होती है ना material education से। ठीक है, और एक सबसे important बात ये है कि, and this is the very important point that we will discuss in this another few minutes, कि जो मटेरियल एजुकेशन है दैट कैन नॉट सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ठीक है। इट विल एड्रेस योर प्रॉब्लम्स एक्सटर्नली बट नॉट इंटरनली। जैसे कि अंदर से वो आपको हील नहीं कर सकती, अंदर से वो आपको ठीक नहीं कर सकती, वो बाहर से आपकी जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करती है मटेरियल एडवांसमेंट या मटेरियल नॉलेज या मटेरियल इंप्रूवमेंट्स, है ना। दे डू नॉट फिक्स थिंग्स इंटरनली। आपकी मनस्थिति नहीं बदलती, वो आपकी परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम है, समस्या है विद मटेरियल एजुकेशन। इट डज नॉट एड्रेस द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। और जब आप मटेरियल नॉलेज से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, देन यू क्रिएट more problems actually. So the solution of one problem, then that solution creates more problems in the long run. और कई साल बाद पता चलता है कि ये जो हमने solution बनाया था, इससे अब ये नई प्रॉब्लम पैदा हो गई है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिर निकालते हैं तो उससे और 10 प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। उस हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन में करते हैं, फिर और 10 प्रॉब्लम जनरेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसको आपने मटेरियली सॉल्व करने के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। So this is an artificial solution, unnatural solution. Material education only provides unnatural या artificial solutions to your problems. So it does not address the real problem. इसके कुछ examples भी लेंगे अभी. But so in this way, we are cheating people by just giving material education and taking God out of the material education. We are actually cheating people. So क्या होता है कि लोग इसमें इतना immerse हो जाते हैं that they think this is the end and be all of it. This is it. This is all we have to do in this life. We just have to gain some degrees and get a good job. And when students are not able to get into a particular college or get certain score or rank, then they commit suicide. What a waste of human life. That's not what human life was meant for. So what if you got into that school? तो उससे क्या हो जाएगा? या आपको वो जॉब मिल जाएगी, या आपको वो प्रमोशन मिल जाएगी, या उससे क्या हो जाएगा? These are all futile engagements ultimately. This is all waste of time ultimately. Shram eva hi kevalam. है ना? So this education, this modern system of education is actually cheating us. It's like a donkey who thinks, Prabhupada ने इसमें use किया है purport में word donkey, कि it's like donkey who thinks only his master can feed him grass, but actually grass was everywhere. अगर कोई donkey को बताए कि तुझे इसके लिए इतना श्रम करने की जरूरत नहीं है, जो वो तुझसे काम करवा रहा है, there is grass everywhere. So donkey will not have to work a day in his life actually. So we are like overworking, over endeavoring, struggling so hard. We have so much, with so much determination, we go into various types of these educational institutions and jobs and whatnot, and get stuck on this wheel
ऑन दिस, इस जैसे वो हैमस्टर का व्हील होता है ना, वो उस पे भागते रहता है, उस हैमस्टर की तरह हम भागते रहते हैं, देयर इज नो एंड इन साइट। वो हैमस्टर बस ऐसे से भाग रहा है गोल गोल, he cannot get off that wheel, he just keeps running on that wheel. And so in this way we just keep running, it's a futile engagement, we don't get anywhere, we are like that hamster, he will not get anywhere, he'll just keep running on that wheel. और इस विद्या के लिए लोग इतना तंग हो जाते हैं, इतना कला कलेश रहता है, when they fail in certain endeavors, when they lose a job, people become, you know, so dismal because, oh, this was taught to us that this is like the biggest thing in our life. No, this is not. Whereas, so इसका मतलब क्या हुआ कि this education, material education, is actually giving you very poor sense of self-esteem. And it takes away your confidence. It is the spiritual education gives so much confidence. आप सोचो कि जैसे people like Amog Leela Prabhu, है ना, इतने, he's so educated, he was so established. He gave up his job to become brahmachari. So spiritual education gives so much confidence that one can throw away these useless engagements without a second thought and rely completely on the Lord and serve him completely, and you become dependent on the Lord. तो ऐसा नहीं है कि हमारी कोई जॉब चली गई तो we need to lose confidence and lose self-esteem. No, because this was not our real business in this life anyways. So on the other hand, spiritual education gives so much confidence कि ये लोग इतने आराम से, you know, they give up that job without a second thought because they are dependent on the Lord, they're not dependent on this world. Material education makes us dependent on this material world, so that is why ultimately our confidence decreases. But spiritual education makes you dependent on the Lord and your confidence increases. जैसे अम्बरीश महाराज, जब उनका वो उनके पास इतना कुछ था, but when he left everything, you know, he did not give a second thought to it. They're so detached. These great spiritual personalities are so great that they are able to detach from everything without a second thought. Yudhishthir Maharaj, जब उनको वनवास मिला, या परीक्षित महाराज, you know, when he was cursed by that little Brahman boy, he suddenly had to give up his kingdom and everything. But no, because of being so grounded in the self, in the knowledge of self, and in your connection with the Supreme, you know, that is the real thing, that is the center of our life. Everything else peripheral was just for, you know, for the time being, temporary anyways. So they are so detached that they give up those things without a second thought. So in this way, spiritual education is actually it enhances your consciousness, that you become very detached from this world, gives you so much confidence to be dependent on the Lord, your one maintainer, one proprietor, one protector. So in this way, this material education has been, you know, cheating people, making us think that this is the end of it all, this is the be all, and if we don't have this, somehow we are very, you know, fallen or something in this world. Actually, if you do not have spiritual education and you may be very materially educated in this world, it does not mean, you know, that education is just a vidya, does not mean anything. So that is one of the main points. But then the other main point we were discussing is that we cannot solve the real problems of life with material knowledge. So is there something called a material solution? Actually, there is no such thing as material solution, because like we said, एक material solution करोगे तो उससे 10 problems और generate होती हैं, फिर उस problem को solve करते हो तो 10 problems और generate होती हैं. This way the problem keeps propagating. Give me one. So then, and then we also discussed material knowledge gives short-term temporary solutions. कोई इसका एग्जाम्पल दे सकता है इस बात का कि कैसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में कि हमने किसी मटेरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की विद अ मटेरियल सॉल्यूशन एंड इट लेड टू अदर प्रॉब्लम्स. ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकता है? यस माता जी. हाँ दीजिए माता जी. माता जी, मुझे ऐसा लगता है राजा जो भरत थे वो सब कुछ छोड़कर आए थे, लेकिन केवल हिरण को प्यार के चक्कर में उन्होंने उनका जो मुक्ति होने वाला था उन्होंने एक जन्म और लेना पड़ा. तो माता जी मैं पूछ रही हूँ कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दो कि हमने कोई चीज को टेक्नोलॉजी से या साइंस से सॉल्व करने की कोशिश की, किसी प्रॉब्लम को, दुनिया की किसी प्रॉब्लम को, और हमने और प्रॉब्लम्स जनरेट कर दी उस चक्कर में.
रवि प्रभु शेयरिंग, आप उनका एग्जाम्पल सुन के फिर बताना कि कोई आपको याद आता है। Hare Krishna Mataji. All these lead batteries that we're using, so many electronics nowadays, which runs on the battery, but then now the problem is how to recycle them. हाँ, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि इनको कैसे रिसाइकिल करें, तो एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है ना। ठीक बहुत है। ज्यादा डैमेज हो रहा है। और कोई एग्जांपल्स प्रभु जी? आपको Cell और phones, सेल फोन? cell ओके, phones, यस माता जी। because they say you can use in emergency, but basically we use cell phones more for materialistic desires, so social media, or waste our time in things, and then we complain our kids are always on social media. हाँ, तो One हम side we give the सेव kids phone, yeah, स्मार्टफोन से सिर्फ smartphones. स्मार्ट रह गए और हम लोग डल एंड डम्ब हो गए, राइट? ओके, Yes, यस। Mataji. और कोई? जी आप तो फिजिशियन हो, आप तो फिजिशियन, आई मीन आप तो इतना बता सकते हो, सो मेनी मेडिकेशन दैट वी टेक, प्रॉब्लम सॉल्व होता है लेकिन उसका साइड इफेक्ट इतना होता है कि जीवन भर उसके साथ लोगों को जीना पड़ता है। हाँ, साइड इफेक्ट्स है Like ना, I have कितनी seen सारी। so many of our people that I treat, they're on a psychotropic medications for so long. Now they're experiencing tremors in the hand, in the face, and so all that is coming. So solution तो दिया लेकिन उसके साथ additional problem भी दिया। यस प्रभु जी, वेरी नाइस। सो कितनी सारी, हम सोचते हैं कि हमने बहुत सारी बीमारियां खत्म कर दी, ऐसे बोलते हैं ना, हमने ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया, लेकिन actually the number of diseases that are coming up are at a faster rate than we're able to cure them. Did you know that? So the number of diseases, medical problems that are coming up are so alarming that we're not able to catch up actually. So problems ऐसा नहीं है कि हमने खत्म भी की, लेकिन खत्म कम हो रही हैं और बढ़ ज्यादा रही है। और कौन सी ऐसी कोई टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक या industrial revolution itself, it's supposed to be a solution for many of our problems, लेकिन अब उससे कितना pollution and so much land is now used for factories instead of for agriculture. There is not enough residential land even, क्योंकि लोग वो factories के आसपास तो रहना नहीं चाहते, तो उसके कितनी दूर दूर तक आप एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल लैंड नहीं कर सकते, तो लोग एकदम क्रैम्प्ड होके रहते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जो हो रहे हैं उससे। So we all know about those. What else? High-rise Same is true for buildings and all. plastic Hare Krishna. Same is true for plastic materials. Yeah, plastic has become a big problem. That has become a problem It was supposed to throughout the world. माता जी, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, पता नहीं इतना रिलेवेंट है कि नहीं, लेकिन मुझे जो ध्यान आता है ना, जो आज के टाइम में हर देश की जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है, वो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो यूएस ने ये जो एटम बम का इन्वेंशन किया था, उस समय उसका तो मेन यही था कि जापान सरेंडर कर दे और उसको किसी भी तरीके से विन करना था, सुपर पावर बनना था। पर आज के टाइम में भी, इतने टाइम के बाद भी अगर आप देखो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर Yes. वॉर में बस यही होता है कि कभी कोई एटम बम यूज ना कर दे, और इसके लिए जाने कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, किसको कैसे यूज करना है, नहीं यूज करना है, लेकिन इन केस अगर किसी ने कभी यूज कर दिया तो उसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो आम जनता का ही होगा, जिनकी कोई मतलब यही नहीं है, गलती ही नहीं है, चाहे वो बच्चे हो, वुमन हो, या आम जनता जो हमारे जैसे लोग हैं। तो एक प्रॉब्लम को जो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उन्होंने इन्वेंशन किया, वो आज तक ये प्रॉब्लम है, और आई थिंक जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। वेरी नाइस। तो ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं जो कब तक, कितने लंबे टाइम तक सॉल्व नहीं की जा सकती, और फिर एक एटम बॉम्ब बनाया, उसके बाद हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, पूरा न्यूक्लियर वॉरफेयर शुरू हो गया। And अभी तक effects are seen, like in Hiroshima and Nagasaki, you can still see the effects. तो कई बार आप सोचते हो कि शॉर्ट टर्म पे मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन फिर उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, तो मटेरियल सॉल्यूशन से लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो बहुत देर देर बाद जाके पता चलता है ना। सो वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने के लिए बॉम्ब को किया यूज, ऐसे ही और अब ये न्यूक्लियर वॉरफेयर इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि ऑल दीज moronic type of leaders have the control of nuclear powers in their country.
और ये कैसे आए, ये लोग कैसे आ गए, ये लीडरशिप कैसे आ गई? पहले रॉयल्टी होती थी, रूलर्स होते थे, जैसे बड़े बड़े गॉड रिप्रेजेंटेटिव्स रूलर्स होते थे, लाइक परीक्षित महाराज या युधिष्ठिर महाराज को एस्टैब्लिश करने के लिए कृष्णा खुद आए, या अम्बरीश महाराज होते थे। ये सब लोग रूलर्स होते थे जो भगवान के प्रतिनिधित्व होते थे, प्रतिनिधि होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लॉर्ड। एंड नाउ दे बिकेम करप्ट, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसी आई। अब डेमोक्रेसी जो है वो भी एक मटेरियल सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि दीज पीपल आर नॉट ट्रेन्ड लीडर्स, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, so they are very low class mentality, so they are corrupt and fraud, and they rise to these leadership positions, and then they have the control of all this nuclear powers of the country, and make such major important decisions for the country, for rest of the intelligentsia of the society actually. तो ये इस तरीके के लोग डेमोक्रेसी से ऊपर आ जाते हैं, और दे हैव नो ट्रेनिंग एक्चुअली इन एनी ऑफ द वैल्यूज और एनी स्पिरिचुअल वर्च्यूज और एनीथिंग। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व की कि चलो ये सारे रूलर्स को, किंग्स को खत्म करके, सॉवरेन रूल, इस तरीके के रूल को खत्म करके, लेट्स हैव डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड ऑल दिस। लेकिन उससे क्या हुआ? पीपल को तो कोई ट्रेनिंग है नहीं, दोज पीपल आर कमिंग अप। तो इस तरीके से यू हैव ऑल मेंशन मेनी मेनी नाइस पॉइंट्स, प्रभुपाद क्या करते थे? प्रभुपाद used to say that God consciousness or Krishna consciousness can solve all the problems of life. He actually used to ask devotees to bring him a new problem each day. कभी कोई उनसे क्राइम के बारे में पूछता था, कभी कोई उनसे ये जो गल्फ में ऑयल क्राइसिस हो रहा है इसके बारे में पूछता था, कभी कोई ड्रग्स के बारे में, वेरी सोशल प्रॉब्लम्स people used to ask him every day, and he would give spiritual solution in every case. एक्चुअली जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वाली बुक है उसमें एक पूरा चैप्टर है जिसमें प्रभुपाद इज टॉकिंग टू द वन ऑफ द शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट के एक लेफ्टिनेंट से वो बात कर रहे हैं। इज आस्किंग कि हम शिकागो में जो क्राइम की प्रॉब्लम है इसको आपका रूल, आपके रिलीजियस प्रिंसिपल्स लगा के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो प्रभुपाद इज गिविंग हिम द आंसर, सो यू शुड रीड दैट। तो ये आइंस्टाइन बोल रहे हैं, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। सो अगर मटेरियल प्रॉब्लम है तो वो मटेरियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, उसका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन होना होगा। तो आप एक्सटर्नल्स को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। वी हैव टू चेंज द मैन फ्रॉम इनसाइड आउट, ताकि वो इस दुनिया में राइट कॉन्शियसनेस से काम करे। When he works with the right consciousness in the world, then externals of the world will automatically change. तो आप इंटरनल प्रॉब्लम, मनोस्थिति को बदलोगे तो बाहर की जो परिस्थिति है वो अपने आप बदलेगी। सो यू हैव टू चेंज थिंग्स फ्रॉम विद इन। इसलिए महात्मा गांधी ने भी कहा था ना, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। Charity starts at home. So if you want to change the world, then you have to change yourself. You have to change your family members, your people around you, and the friends around you and community around you. Charity starts at home. So be the change. So then the externals will change. So you have to spread the values, the virtues, the spiritual knowledge. You have to get grounded, है ना? ग्राउंडिंग होगी तभी बाहर के लोग भी उनकी कॉन्शियसनेस इंप्रूव होगी। तो फिर ऐसे लोग क्राइम नहीं कर सकते। दे कैन नॉट, दे डोंट फ्रॉड, दे डोंट चीट, दे डोंट लाई, दे डोंट टेक ब्राइब्स, they don't destroy the environment, they don't hurt people, they don't harm anything or anyone. They will cooperate with others, right? They will help and uplift each other, serve each other. So these type of people who have the spiritual education, who are internally very well stable and nicely situated and grounded, these people will then become topmost politicians and teachers. They will become topmost lawyers, डॉक्टर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एवरीथिंग, है ना? फिर वो टॉप मोस्ट वो बन सकते हैं। पर अभी हम कैसे, हम सिर्फ मटेरियल एजुकेशन से दे रहे हैं, विदाउट एनी स्पिरिचुअल नॉलेज, विदाउट एनी गॉड कॉन्शियसनेस, विदाउट एनी रिलीजियस प्रिंसिपल्स। वी आर जस्ट गिविंग atheistic knowledge, which is leading to very corrupt society and leading to all these demonic inventions and whatnot. So ये जो लोग होंगे God conscious people that have the right religious principles, they'll have high purpose. ठीक है, वो लोग दुनिया में petty चीजें नहीं करेंगे. They will not be able to commit small crimes and things in this world because they have a very high purpose. Their purpose is to please the God. They know the consequences on the soul if they committed these kind of crimes. They want to please the Lord. They want to satisfy the Lord. They want to satisfy and please the Lord's representatives. So they will not harm that interest at all. So they're not working for short-term, temporary, personal benefits. वो अपने सिर्फ पर्सनल एजेंडा के लिए काम नहीं कर रहे। तो ये बताया गया है। एक मैंने बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ा था, उसमें बताया था कि हरे कृष्णा मूवमेंट बेनिफिट्स द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी
by offering practical solution to today's material and spiritual problems. चाहे वो कोई भी problem हो, ethnic problem, racial and cultural conflicts. ये conflicts हो ही नहीं सकते अगर आप में एकत्वम का भाव है कि सभी लोग एक ही भगवान के children हैं, right? Religious intolerance नहीं होगी, hunger, disregard for animals in human life, health, diet and disease will be perfect, you know, all these things will be perfect. Environment को आप harm नहीं करोगे, drugs और alcohol abuse करके अपनी body को खराब नहीं करोगे, crime में आप किसी को hurt कर ही नहीं सकते, economic imbalance नहीं होगा because you are, you know, there's no corruption in that society. Family breakdown, right? Because everybody is you're looking as a child of the Lord, so you're their servants. Decline of ethics, morality, stress, anxiety, failure of education, mechanistic worldview. ये mechanistic worldview होता है कि बहुत ही hard-hearted approach to the world. Like the whole world is just there to serve me, is at my disposal for my enjoyment. Very impersonal view of the world. पहले कैसे होता था ना कि घर में एक गाय भी होती थी तो उसका नाम होता था, उसको फैमिली मेंबर की तरह रखा जाता था, एक पेड़ होता था घर में, है ना, एक रिवर होती थी उसका भी नाम होता था, हर चीज बहुत पर्सनल होती थी. अब तो लोगों को अपने नेबर का नाम भी नहीं पता होता. So like you were talking about cell phones, yes, we have all these cell phones to improve the connectivity, but people are not connected. People are so separated, people are so disconnected that they have, you know, no intimate connections. Nobody's, you know, sharing confidences with each other and asking the welfare of each other. ऐसा भाव ही नहीं है कि just किस लिए यूज कर रहे हैं फोन को, कोई गलत वेबसाइट्स देखने के लिए या फिर कोई गलत वीडियोस वगैरह देखने के लिए या just gossiping करने के लिए, है ना, all these things के लिए, बस न्यूज पढ़े दुनिया की and all this. But it was supposed to improve connectivity. So actually एक बहुत अच्छी poem आती है, you might have heard this poem. इसका credit बहुत लोगों को दिया जाता है. Some say that Dalai Lama wrote it. Many people have been credited for this. So nobody knows who wrote this, but it's called the paradox of our age or paradox of our time. So it says, we have taller buildings but shorter tempers, wider freeways but narrower viewpoints. We spend more but have less. We buy more but enjoy less. We have bigger houses and smaller families. More conveniences, less time. More degrees, less sense. More knowledge, less judgment. More experts, more problems. More medicine, less wellness. We drink too much, smoke too much, spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get too angry, stay up too late, get up too tired, read too little, watch TV too much, and pray too seldom. We have multiplied our possessions but reduced our values. We talk too much, love too seldom, hate too often. We have learned how to make a living but not a life. We have added years to life but not life to years. We have been all the way to the moon and back but have trouble crossing the street to meet a new neighbor. We conquered outer space but not inner space. We have done larger things but not better things. So that is what the value of transcendental knowledge is, that it helps you to fix all these things that it is saying about shorter tempers. Your temper cannot be short when you are spiritually advanced. Your viewpoint is very expanded actually. You know, you're properly situated in happiness and joy and proper knowledge and sensibilities and your judgments and sense of body, how to treat that body, how to treat other people, all this improves. अभी एक major जो invention है that I was thinking about is AI, artificial intelligence. I think about it and it makes me shudder कि artificial intelligence है ये जो chat GPT वगैरह, this is thinking for the people. So actually students and all are writing their essays and things with the AI. So we are going to have a next generation of very, very dumb people. I mean, they cannot even write essays. हम लोग कैसे essays लिखते थे बड़े बड़े, हमें इतने टाइम में इतना बड़ा वो टॉपिक पे लिखना होता था. So कितनी गलत, मतलब, you know, people are going to misuse it. So yes, it's supposed to help us in some ways, but it's not going to be used for that purpose alone. It's going to be used for many other, actually for a lot of cheating type of purposes. So these type of artificial solutions, sometimes they're not needed. We don't need itna time in the, मतलब हम सोचते हैं कि हमें time ज़्यादा मिल जाएगा, but what will people do with that extra time? People will only misuse it in many other wasteful things. ऐसा ही कार्स वगैरह, प्रोपत कार्स का बोलते थे, मोटर कार्स की. अब क्या है कि लोग चल नहीं सकते, चलते नहीं हैं तो कोई ऐसे ही मशीन्स हैं, so no heavy labor.
So there are so much obesity, so much health problems, because people don't walk anymore. Everywhere people are using cars, not to mention the pollution and all the roads that need to be paved through the mountains, and mountains that need to be blasted with the dynamite. And then people, when they become obese, then you need weight loss medicines for that, and which has their own problems, and you need gyms, and artificially we are trying to lose weight with so many things. तो कितने ये अननेचुरल सॉल्यूशंस हैं और इनसे और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और हम क्या चाह रहे हैं, हम ये सब सॉल्यूशंस क्यों बना रहे हैं? बिकॉज वी जस्ट वांट टू इंक्रीज आवर एबिलिटी टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, वी वांट टू कंट्रोल दिस मटेरियल वर्ल्ड। एक मैंने आर्टिकल और पढ़ा था, वो बोल रहे थे कि हम कोई ऐसी दवाई निकालेंगे जिससे नींद ही नहीं आएगी, यू वोंट हैव द नीड टू स्लीप। लेकिन आप उस टाइम का करोगे क्या? आप इतना टाइम एक्सपैंड करना चाहते हो अपना, बट कृष्णा सेज टाइम आई एम. So actually, when we, we've realized in our own life, when we are chanting first thing in the morning, the time actually expands. We have become more time conscious by that way, and we are able to use time much more than anybody else. So Krishna says, time I am. It's his energy. You cannot control it. You cannot get rid of sleep altogether. So is tarike se, people want to stop the aging process. People want to eventually defeat even death. They want to overcome all diseases. Somehow or the other, we just want to enjoy this world with this body. It's not possible. So बहुत ही ज़्यादा crisis की situation in terms of many ways, in environmentally and medically and physically and technologically, politically. So this is saying the real problem is not whether machines think, but whether men do. So men have stopped thinking. There is no perfect solution with material solution. Long-term impact. इस दुनिया में suffer करना ही पड़ेगा. इस दुनिया में feared living. There is no perfect solution to anything. And whenever you make a material solution, a long time before you will understand its consequences. So you have to choose your poison in this world. So, इसलिए हम बोलते हैं, जैसे हम सर्जरी करते हैं, जैसे मैं सर्जरी करती हूँ, I give risks and benefits to people. And I tell them that there is always, I will do the surgery only if there is more benefit. Lekin hamisha there is a problem. There is always some problem with every choice. So choose your poison carefully. Which poison do you want to drink? So you'll have to drink the poison which will harm the least of all. Poison to peena hi padega in this world. So this is in this way, these things cannot solve the problems. So we should invest actually in relationships. We should spend time on the man himself. Develop, invest your time and energy in the most extraordinary machine, which is the human himself, to develop them, cultivate them, enrich people, enrich self. ये भी यही बात बोल रहे हैं. So Prabhupada इसको illusion बोलते थे. This is called ultimately, so you've understood the principle, this is called avidya. This is the avidya, trying to be the lord of material nature, keep forgetting Krishna, and ultimately, you get trapped more and more in the material energy. Okay, I'll stop here because we have exceeded the time quite a bit. We'll finish this verse next time and read its purport and combine it with the next one. Next one is on the same theme. Anybody wants to share anything? Any other examples, analogies? Who wants to share? Poonam Mataji, Ravi Prabhu, Rekha Mataji. Hare Krishna, Priyanka Mataji. Nice to see you. Do you want to share anything? Hare Krishna, Mataji. Mataji, what I understand is, जैसे बोलते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. उसी तरह से आई थिंक मटेरियल सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर एक मटेरियल सोल्यूशन लेंगे, फिर उसको सॉल्व करने के लिए दूसरा, फिर तीसरा, फिर सो मेनी, एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, बिकॉज हर मटेरियल सोल्यूशन का एक वो आ रहा है, प्रॉब्लम भी आ रहा है उसके साथ, या एक नहीं, प्रॉब्लम ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके साथ. यस माता जी. इसलिए कई बार लोग ऐसे बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल गुरुज की क्या जरूरत है, स्पिरिचुअल एजुकेशन की क्या जरूरत है, बट दैट इज द सेंटर, दैट इज द बेस लाइन, दैट इज द रूट, द फंडामेंटल. उसको अगर आप रूट स्ट्रांग रखोगे, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग अच्छी बन सकती है. अगर आप सिर्फ बिल्डिंग बनाओगे बिना रूट के, बिना फंडामेंटल के,
फाउंडेशन के, तो फिर वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसलिए अंदर इंटरनल्स अच्छे होने चाहिए तो एक्सटर्नल्स अच्छे हो जाते हैं। Absolutely. यस रवि प्रभु प्लीज शेयर। Yes, Mataji, Hare Krishna. No, Mataji, I just wanted to add one. I was also listening about the artificial intelligence and the upcoming benefits and thing. I mean, आपका व्यू है एकदम माने सही है कि लोगों को थोड़ा और ढीला कर देगा and they will not use. But there's another view that I liked also. It's going to make intelligent people more intellectual. Because आपका काम जो हो रहा है कम समय में हो जाएगा, then you have more time to do more better things that intellectual people can decide what is better for me. So like for a person like you and me, maybe we'll have more time to sit and read the scripture because the same work is done in less time. So that's another view that I had heard from another, the spiritual guru, you can say. Sure, Prabhuji, but how many people are like that in this world? Most people we are all born Shudra in this world. So 99.9% people have the low class mentality. So when these things are invented, they should be invented to cater to that population, not the top class people. Top class people तो वैसे भी time निकाल लेंगे. लेकिन जो low class people and they will misuse that. So जब inventions करते हैं ये intelligent लोग, तो उसको जो ordinary लोग हैं वो misuse करके they actually waste more time, and so people are coming up with all these AI generated अजीब तरीके के videos आ रहे हैं of celebrities and whatnot, अश्लील type के. So this is going on, and that becomes so that devalues the whole thing, which yes, some value, minimal value, but more problems. So अगर मुझे एक ईमेल लिखने में 5 मिनट की बजाय 2 मिनट लगते हैं तो आई डोंट फील कि कोई खास उसमें मुझे फायदा है, लेकिन जो नुकसान है that I feel is much more. But anyways, so the problem is we need to work on the ground level and improve the consciousness of people. So we can offer these type of solutions, but also cultivate those values of hard work and not to use this as a tool for cheating and lying and committing frauds and harming people and their reputation. And these kind of values need to be given. So हर चीज में ऐसा ही है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है. आप अच्छे हैं तो आप अच्छा यूज करेंगे और बुरे हैं तो बुरे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि people in this world have very low class mentality, very low consciousness and not cultivating any spiritual knowledge or values. तो वो उसको misuse करने का potential ज़्यादा है in this world. So that's my 2 cents on this. Okay, anybody else wants to share anything? So next time we'll finish this verse because we have to talk about the transcendental knowledge and the unscrupulous ways of giving transcendental knowledge also, the corrupt knowledge. वो next time करेंगे along with the next verse. Thank you everyone for joining. I'll stop the recording. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः.